Continuing with question number 16, that is eradication of chronic malnutrition calls for an all-encompassing approach. बोल दिया उसने. अब आपके हाथ में है कि all-encompassing में आप क्या लेके आओगे. Throw light on the importance of nutrition-specific and nutrition-sensitive approaches for achieving the goal of zero hunger. अब आपने बताया कि यूनिसेफ बोलता है कि जीरो हंगर विल बी अचीव्ड ओनली व्हेन देयर इज फोकस ऑन द फॉलोइंग: न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, जीरो पॉवर्टी एंड मैटरनल हेल्थ. एज इंडिया बीइंग a food surplus country faces challenge of nutrition hunger because of chronic malnutrition. बहुत अच्छा. Anemia, stunting, wasting, NFHS भाई आपने बताया, zero food. I think I like the diagram the way it is put up. अब क्वेश्चन ये है कि आपने ऑल इनकम्पासिंग अप्रोच में आप क्या करोगे. ये विल हैव chronic malnutrition, nutrition specific agriculture, pulses in the midday meal and Shri Anna, that is millet. बहुत अच्छा बात है. Maternal and child health welfare, पोषण. Preventive health care to increase increase of maternal plus child immunity. Okay. इंद्रधनुष मिशन की आपने बात की. टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रिशन कंटेंट, तो पंचायत को भी ले आओ भाई, इसमें क्या दिक्कत है. पंचायत को ले आओ, डिस्ट्रिक्ट को ले आओ. अवेयरनेस ऑफ स्कीम्स एंड वेलफेयर मेथड्स टू मदर, फॉर एग्जांपल पोषण सखीस बता दो भाई. झारखंड में है, बिहार में है, मुंगेर, कुछ तो लिख दो. This requires collaboration between grassroots level activism, ASHA, Gram Panchayat, okay, it has come up. Competitive federalism between state, best model, chalo, breakfast scheme. I think this answer is well written. Nutrition sensitive approach would be achieved by investing in nutrition rich food, awareness, जैसे मखाने की बात हो रही है, subsidized food via fair price shops, legislation like HFSS, tax proposed by Kerala, and institution measures like FSSAI, Eat Right campaign. I think this answer is quite well written. It is reflecting the right ideas. Although an overhaul criminal law in India is being long cherished reform, creating people-centric legal structure requires a complete Indianization of criminal justice system. बिल्कुल ठीक बात है. तो डिस्कस citing recommendation of the law commission. तो आपने बताया strengthening judiciary में accessibility, justice, legal aid, NALSA, alternative dispute redressal, ADR, लोक अदालत, fast track court. बहुत अच्छा. I think good points. To achieve people-centric requires not complete Indianization, but a mix of Indian plus best model of judicial system in other countries. Okay. Criminal laws focus serve challenges mentioned by 2018 Law Commission report. Getting a lot of decriminalization of provision needed for petty crime. Highly cumbersome process. Legal language जो है वो complete simple नहीं है. ये गलत बात है. फिर उसके बाद आपने बताया कि कैसे focus on curative justice होना चाहिए, then punitive justice, and then archaic laws, they need to be changed. Inclusion of local tradition method in the, I think, the very good flow and good simple ideas based on some recommendation. Legal precedent of Committee on Law Ministry, Bharatiya Nyaya Samhita, Bharatiya न्यायाधीश Sureksha, Bharatiya Sakshya Samhita was enacted. Thus, overhauling of criminal law is not long cherished dream. Is not a long cherished dream. Slowly, the judicial legislation process is adapting to decriminalization. Okay, several time community service, focus on criminal forensic, bail is normal, jail is exception. Supreme Court laid down principle for inclusive language in legal code. Okay, use of indic principles, Lok Adalat, Gram Nyaya case, and last point is of translation of judgment. I think very good points, very comprehensively written, must be appreciated. Critically examine the utility of social audit frameworking in bringing the governance people to the field. Critically examine the utility. So first of all, social audit framework is not coming naturally to the public institutions or the public systems. It has been the demand of the people when they felt deprived of basic fundamental services. The lack of inspiration among the people because of the deeds done by the government and also the processes adopted by it. So Kerala, 100% social audited. MNRG, MG Narega, Gram Panchayat, civil society, utility, efficacy of scheme, service based on cost benefit analysis, accountability of executive people, collaborative effort between several stakeholders, act as a mirror to service giver. बिल्कुल सही बात है. Participatory government. Social audit can be social impact assessment of development project, environment impact assessment of projects, audit of schemes, loans. Utility of social audit framework is having limitation from achieving full potential. I think good points. Social restriction in Gram Panchayat, for example, practice of caste exclusion. Yes, this is true. Political arm twisting of auditors, for example, RTA activist harassment, lack of foundational literacy of members causing proliferation system.
digital literacy missing, leading to digital divide, legal backing. So I think lot of good points are visible. Non-trans-participating nature of people, lethargy ये कारण है, बिल्कुल ठीक बात है. So improve legal backing, third-party certification, competitive federalism below state level. जैसे फॉर एग्जांपल हरियाणा इज हैविंग अ 7 स्टार रेटिंग एंड देन इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑफ ऑडिटिंग. आपका पैसा आपका हक, कम्युनिटी रेडियो बुंदेलखंड एंड अंत्योदय एम ऑफ स्कीम can be achieved fruitfully. I think good efforts again, the ideas are reflected. Enumerate the factors which make Indo-Pacific theater of opportunity for India. तो आप बता रहे हैं पर्शियन गल्फ, इजराइल, स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, पैसिफिक. अब इंडिया कहाँ लिखा आपने इसमें? ये सारा लिख के आपको इसको थिएटर ऑफ अपॉर्चुनिटी खैर आपने बना दिया, लेकिन आप ऐसे ही इंडिया कुछ भी करके करते हो, ठीक है, ये भी चलेगा. फैक्टर्स ऑफ जियोस्ट्रेटेजिक पोटेंशियल फॉर इंडिया, इंडियन ओशियन, इंडियन टर्फ, रीजनल हेजेमनी, स्ट्रेटेजिक लोकेशन. उसके बाद ट्रांस इकोनॉमिक पार्टनरशिप, अपॉर्चुनिटी फॉर रीपिंग जियो इकोनॉमिक IMEC कॉरिडोर, एलिमेंट ऑफ कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन फॉर बीइंग ग्लोबल पावर, इकोनॉमिक एक्सप्लोरेशन इन दिस रीजन. ओके फाइन. However, there are certain impediments. क्या land route है? Land route is more than sea route by China. Silk route, TPEC, area of disaster prone region, cyclone, tsunami. उसके बाद आपने unilateral grouping becoming anti-China, of India not joining trade concession agreement with ASEAN. RECP की बात की आपने. India acting as a puppet to India Pacific, but is pivoting in international world order. Camping नहीं है इंडिया की. To use potential post development, Sagarmala country collaboration, Daman, for example. Sir, Oman, Dakkam Port. Oman, okay, yeah, correct. Coastal security, Sagar, IORA, deep sea security. चलिए. BRICS can serve as a platform for shopping post-Western global corridor. Post-Western global corridor. Beyond USA, very good start. Need strong multilateral institutions, highlighted ORF, Tyson and Dalo. India BRICS can be better forward. कैसे? World beyond World Bank Group, IMF, narrow UN organization. Good choice of words. BRICS can serve as platform collaboration of major non-West powers, sending signal to global South for its intention, focusing on finance at affordable rate, developing countries. उसके बाद supporting bilateral trading mechanism beyond SWIFT, internationalization of BRICS. You know, in next shift in geopolitics to challenge dollar hegemony, taking stand based on principle of sovereignty, theory of sovereignty, that is non-intervention into each other's growth. But its position is held by internal contradiction, adverse grouping, having diverse international, for example, Iran versus Saudi, India versus China. Processing not, grouping not having military collaboration or exchange like NATO. Very good point. Developing countries skill development होना चाहिए, heavily dependent on developed countries for the tech, finance and everything. Internal FTA or even trade concession is not here. So very good points, very pertinent points, and very much sober points. India having strategic autonomy changes to aim the BRICS from being anti-West. However, its economic might, demographic dividend, oil resources offers huge potential for collaboration with other each other. I think it's well written. I think a couple of answers are very beautiful written. They reflect the whole idea how whole paper should be. So moving forward, Constitution of India is not a bag of borrowing, but a beautiful patchwork. Chaliye, is an amalgamation of provisions, different constitutions as per the needs. So introduction is definitely on track. It should be like this. Not a bag of borrowing, molded as per the needs of Indian society. Emergency provisions, एक साथ बता दिए. 352, 60 fits fundamental rights. USA, part of basic structure in India. Unlike, so more structured, more appropriate, and more streamlined. Constitution supremacy in India. Unlike UK, बहुत अच्छा लिखा. Mirrors nations diversity, affirmative action, ठीक बात है. Article 15-16, safeguarding interest, women, children, EWS हो गया, inclusive society, discrimination, third gender recognition, Article 19. So more appropriate, more structured, and more more innovative. That's what we can say. Prohibition of employment as manual scavengers in the Act has proved ineffective in the face of socio-economic reality. Inhuman practice completely prohibited. ठीक बात है. Is an effective act. Providing legal sanction, ठीक बात है. People involved in managing penal measures against people employing rupees 40 lakh and 5 year non-bailable offence. ये है बात, ये कि ये लागू नहीं होता, लेकिन सोशल इकोनॉमिक रियलिटी को मानता ही नहीं है इसको. तो कंपनसेशन ड्यू टू दैट, ट्रेनिंग द पीपल थ्रू ITIs,
एंड मैकेनाइज क्लीनिंग होनी चाहिए, यहाँ लिखना जाना चाहिए था पहले आंसर में भी, मैकेनाइज क्लीनिंग का प्रावधान होना चाहिए, इंसान की यूज ही नहीं होनी चाहिए। तो अल्टरनेटिव मेथड्स हैं यूजिंग मशीन, जैसा आपने बोला स्वच्छ भारत है, लेकिन पहली बात ये है कि जिस समाज से आप करवा रहे हैं उसके अंदर आप गरिमा और उसके अंदर डिग्निटी पैदा नहीं कर पाते, इसलिए वो घबरा कर, दुखी होकर, परेशान होकर, डिजेक्टेड होकर वो काम कर देते हैं। ये है सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी। उनके पास मेंटल, स्पिरिचुअल और बाकी अपॉर्चुनिटीज का अभाव है। तो ब्रिंगिंग ए बिहेवियरल चेंज इज अ वेरी गुड पॉइंट, इट इज बीइंग ओवरकम, आई थिंक ऑन ट्रैक, वंडरफुली रिटन, गुड स्ट्रक्चर। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर की अगर हम बात करें, आर्टिकल 123 इफेक्टिव फंक्शनिंग लेजिस्लेचर, आपने भी बताया कि, अच्छा आपने नहीं बताया, आपने सीधे बताया कंसर्न्स क्या क्या है। violate doctrine of separation of power, executive becomes legislature, concentration of power, undermines debates and consensus, surpass checks and balances. तो रियल implications क्या है, पार्लियामेंट when it comes in session giving it final approval, बाईपास करते हैं, जैसे डीसी बदवा केस की आपने बात की, क्रिटिसाइज रिपीटेड promulgation of ordinances by Bihar government, this is more appropriate if we compare with the previous answer, this one is more on track. Ordinances play a critical role, unforeseen emergency situation like banning instant triple talaq आपने बताया, fulfill aspiring citizens, that is Aadhaar ordinance to secure benefits, therefore discrete and minimal use of ordinances doesn't weaken accountability, I think very fairly good argument. Delimiting constitution जब हम बात करते हैं, the process of re-examining the need for change in the size of the constituencies and it is distribution in is same in each one of them as per the rising population and migration. Decentralization of power in the hands of voters. कमीशन आपने बता दिया कब कब फॉर्म हुए, दिस इज अ गुड पॉइंट। जनरेट ट्रस्ट, चलिए, इक्विटेबल पावर, चलिए। उसके बाद आपने इफेक्टिव गवर्नेंस की बात की, उसके बाद आपने इफेक्टिव इंश्योरिंग वेलफेयर विच इज द लास्ट माइल, इलेक्शन कंडक्टेड इन प्लान एंड साइंटिफिक वे। लॉजिस्टिक एक चैलेंज है, मैन पावर है, लार्ज ज्योग्राफिकल साइज एक पावर है, यूज ऑफ डिजिटल डिवाइसेस, डूइंग अदर सर्विस लाइक सेंसस 2021, दिस इंडिकेट द नीड फॉर डी। तो आपने दूसरे अप्रोच से आपने डिलिमिटेशन के चैलेंजेस और उसकी बात की, तो आंसर ये भी ट्रैक पे आएगा। पहले 4-5 आंसर में अगर हम कहें तो ये आंसर का पलड़ा थोड़ा भारी है। अगर बात फिर से लेटरल एंट्री की करते हैं सिविल सर्विसेज में, तो लेटरल एंट्री सर्विस आल्सो प्रमोट्स कैपेबिलिटीज, मेरिट, टैलेंट, बट इन द फॉर्म ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल की बात है। सोल बेसिस फॉर रिक्रूटमेंट वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। रिलेवेंस ऑफ लेटरल एंट्री क्या है, यूनिक आइडिया सॉल्यूशंस लेके आएंगे, जैसे आधार आईडी हेडेड बाय नंदन नीलकेनी, सही बात है। बेटर एंड जुडिशियस ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक बात है। स्पेशलाइजेशन इन रिस्पेक्टिव फील्ड्स लाइक प्लानिंग, एग्जीक्यूटिव, मॉनिटरिंग। जॉइंट सेक्रेटरी लेटरल एंट्री डीओपीटी में हुआ, फास्टिंग इफेक्टिवली कॉम्प्रोमाइजिंग without compromising the timelines of various projects, renewable energy, JS. So I think good fair examples. Apprehensions आपने बताया, amalgamation quickly coming from private sector make it difficult to understand the public governance model. Short tenures, resistance from bureaucrats who qualify one of the challenging selection process. So I think fair enough. This answer is also, I would say, it is in sense, in certain ways, much better than the previous arguments. Challenges created by anti-defection law and suggest measures to enhance its effectiveness as a deterrent against political corruption. अगर हम इसकी बात करते हैं तो एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड, आपने बताया, उन्होंने भी बताया था, गोल वाज टू स्टॉप मिसयूज, ठीक बात है। उसके बाद आपने बताया पार्टी विप, ये भी बात वहां लिखी गई थी लेकिन यहाँ थोड़ा बड़े उसमें लिखी है, फोर्स द मेंबर्स ऑफ द हाउस टू वोट एज मैंडेटेड बाय द पार्टी, रोल ऑफ स्पीकर, ये पॉइंट भी है, लेकिन कैसे पुट अप करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। स्पीकर मस्ट नॉट बी बायस्ड, delay in decision making leads to political uncertainty as seen during Karnataka, ये भी पॉइंट था। bypassing the law, 2/3 members defect, no action can be taken, स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी हैम्पर करता है, राइट टू वोट जो पीपल का उसको एक तरीके से डिस्क्रेडिट करता है। स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग, सुप्रीम कोर्ट ने बोला मोर स्ट्रिक्टर नॉर्म्स फॉर मर्जर ऑफ पार्टी eliminate the ease with which it is being done, cooling period undertaking, therefore law has proved crucial to respect people's mandate from changes, या वो बात हमें करनी चाहिए। एलजीबीटी की अगर हम बात करते हैं, एलजीबीटीक्यू की, तो उसके बाद आपने कहा नॉर्मलाइजिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ कम्युनिटी विल ट्रूली क्रिएट इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी, इट इज आल्सो सोशल रियलिटी दैट इज गोइंग टू टेक सम टाइम। उसके लिए रिसोर्सेज होने चाहिए, उसके लिए इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए। वन ऑफ द वेज अवेयरनेस, बात फैमिलियर विद राइट्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। नालसा की बात कर दी, पॉलिसी इंक्लूजन की बात कर दी, जॉइंट अकाउंट्स फॉर एलजीबीटीक्यू इंडिया की बात की, फर्टिलिटी, प्री फर्टिलिटी राइट्स एंड ट्रीटमेंट इन स्पेन आपने एग्जांपल दिया। Political representation and employment opportunity, for example, Paras Tomar, बिल्कुल challenging traditional norms, sudden removal using he or she in the official documents, gender neutrality, I think this is a very good point, point number 5। अभी भी आया था, एक IRS ऑफिसर का भी आया था,
ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम विक्टिमाइजेशन टू एम्पावरमेंट, बिल्कुल ठीक बात है, गुड पॉइंट. इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, human trafficking, risk and poverty, vulnerability, role of police in registering FIRs without delay. Therefore, it is a gradual process of positive change in happening in society. I think fair enough. This answer is also on track, providing certain elements of progress. Social apathy towards mental health issues has resulted in the marginalization of individuals dealing with mental disorders. Elaborate and suggest measures to bring mental health concerns from the periphery to the mainstream. सोशल टैबू मानते हैं, फेलियर फॉर पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, बिल्कुल ठीक बात है. इट्स द परसेप्शन दैट नीड्स टू बी रिफॉर्म्ड. इट हैज बिकम अ साइलेंट किलर, ठीक बात है. लिसनिंग, लाइफ टाइम डिपेंडेंट ऑन पेरेंट, बर्डन, violence and abuse cannot be successful person, waste of money and treatment. So there, these are socially able people with sixth sense who are doing wonders. For example, para athletes like Sheetal Devi. So they, like, especially able people and mental disorders, they both are, different thing, we can't mix it, but then you can say there can be double jeopardy in that sense, and they can be brought into center. So this example will not be fitting over here. The example fit. Their disease is called orphan disease, mental health program and the fund for treatment, promoting employment like cafes independently. बात तो ठीक है. Sensitization policy and media reporting guidelines and ban the term mental mad, पागल, ये थर्ड पॉइंट आई एग्री. इवन मूवी आई थी पगलैट करके, कोई मूवी भी आई थी, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स टू डील विद द चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम मेंटल हेल्थ. आई थिंक पॉइंट नंबर 3, 4, 5 आर बीइंग अप्रिशिएटेड, बट द ओवरऑल आंसर, उसका बैलेंस और उसका जो स्ट्रक्चर था वो गड़बड़ हो गया. इंडिया मस्ट एक्सरसाइज रिहैबिलिटेशन स्टेबलाइजिंग इन्फ्लुएंस ऑन इट डिफिकल्ट नेबरहुड, effectively safeguard national interest का. नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट, बैलेंस एंड शेयर्ड, आपने बताया. चलो, चाइना बता दिया, बांग्लादेश बता दिया, वहीं लिख भी दिया आपने. श्रीलंका हो गया. इंडिया's foreign is guided by protecting sovereignty, integrity. For example, CPEC concerns, Vasudhaiva Kutumbakam, dialogue and diplomacy, dispute resolution, de-escalation. चलिए आगे. strict measures against Pakistan, non-participation, shunning trade relations with Pakistan, reviving unity, Nepal and Bhutan, investment infrastructure, India. ठीक है, बहुत ही ब्रॉड है, आपने अच्छा लिखने की कोशिश की. बांग्लादेश टेक्सटाइल एक्सपोर्ट फॉर इंडिया, बिल्डिंग कनेक्टिविटी, आपको Agartala railway link, Myanmar role in refugees from Pakistan on Rakhine state. Therefore, India gives priority towards national interest and follow flexible and adopt approach to maintain stable relation. बात बिल्कुल सही है. डिफिकल्ट नेबरहुड है तो इंडिया के स्किल्स भी इतने ज्यादा हैं. इंडिया अंडरस्टैंड्स देम बेटर देन एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड. तो ऐसा करके आप लिख सकते हैं. NATO is a system of US-led collective security. Europe is relevant in increasing multipolar world. तो NATO सिक्योरिटी एग्रीमेंट आपने बताया. उसके बाद यूएस और यूके की बात की, स्टिल रेलेवेंट है. मिटिगेट हेजेमनी पावर ऑफ रशिया. हाँ, ठीक बात है. यूरोप इज ए मेंबर इन डिसीजन, आई एग्री विद दिस. एक्ट एज डेटरेंस. तो वो जो हमने पहले आंसर पढ़ा, इट वाज फार, मतलब थोड़ा ज्यादा इससे डेप्थ में था, ज्यादा उसके अंदर पॉइंट्स थे. डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग, ट्रांसपेरेंसी इन चेंजिंग द पॉलिसीज ऑफ डिफेंस एंड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, बात तो वही करता है ना. At the same time, has given to several challenges. Biggest one is the apprehension of Russia. ठीक बात है. Russia-led Ukraine war, global economy, does it has given rise to adult. तो वही बात है, उसका मोल्ड करने की बात है. वो वाला आंसर अगर आप देखते हैं अपने आंसर के साथ, तो थोड़ा सा आपको ट्रैक चेंज करना पड़ेगा. Then rest is on the track. Indian constitution is unique in the sense it is not only creating limited government but also establishing welfare state. तो यूनिक है भाई. कई तो सिर्फ जैसे फ्रांस है, वो सिर्फ ज्यादा रिपब्लिकन मोल्ड की बात करता है. यूएस है, वो भी बात करता है, लेकिन इंडिया जैसा कोई नहीं है. Both limits and amplify welfare duration, limited government. ये बहुत अच्छा है. The diagram works and you are the marks for this. No arbitrariness, welfare of people, DPSP, उसके बाद fundamental rights, affirmative action, subsidy grant. चलिए, constitution is connecting link between limited and, बहुत अच्छा, ठीक है, stable, ठीक है. Limited government implies that government ensures implementation of the constitution via laws, policies and, नहीं, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पर यही है कि ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब कुछ भी कर ले, वो बंधी हुई है लोगों से, सेवा करेगी, लेकिन ज्यादा मेवा की अगर बात करेगी तो उसको जनता जो है उठा के पटक देगी. लिमिटेड गवर्नमेंट है हमारे. सरकार के ऊपर जो है जितने अंकुश है ना, निरंकुश सरकार नहीं है हमारे. तो ये पॉइंट आना चाहिए था. दैट इज योर मिस्ड. So I think this is the conceptual clarity which you could bring. Constitution limit the government to hold free fair elections. उसके बाद safeguard the basic structure. हाँ, यहाँ बिल्कुल आंसर फिर से ठीक हो गया. डॉक्ट्रिनल सेपरेशन ऑफ पावर्स हो गया. उसके बाद वेलफेयर स्टेट है जो मेन स्ट्रीमिंग एजुकेशनली socially backward classes 27% to 10%. Food security, National Food Security Act, poverty alleviation multi-dimensionally through Ujjwala Yojana, सौभाग्य स्कीम. एंड देन उसके बाद राइट ऑफ LGBTQ, उसके बाद वुमेन SC/ST, उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन इज द powerhouse of Indian welfare state taking us towards Viksit Bharat. I agree with this. Rest answer is on track.
Throwing light on the constitutional provisions for safeguarding autonomy of CAG recommend measures to any role as a confined keeper of the government. मैं तो कहता हूँ उनकी रिपोर्ट्स को कॉलेजेस में उसकी रिपोर्ट्स को एनुअल यूज के अंदर उसकी रिपोर्ट्स को पब्लिक किया जाए, उसकी रिपोर्ट्स के ऊपर जो है बात करके मैगजीन्स में कॉलम भी बना दिए जाए, तो अपने आप कंसाइंस कीपर की तरह आप बढ़ जाओगे। चलिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, फाइनेंशियल ऑडिट करता है, ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बाद फेयर अपॉइंटमेंट है, उसके बाद रिमूव्ड इन द मैनर सिमिलर टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑडिट आर ट्रांसपेरेंट एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। चलिए रिपोर्ट सबमिट रिलेशनशिप फॉर असेसमेंट, follow up mechanism for reports to ensure action will plus will broaden the ambit and scope of auditing domains, real time audit, ठीक बात है, Delhi airport audit, GPP highlighted financial discrepancies, specialization with expert IT infrastructure, bank and defense, self audit to ensure fair and just functioning of CAG. So I think good points, points यहाँ पर भी बहुत clarity से put up किए गए हैं। Importance of executive agencies in checking corruption and impropriety cannot be overstated. Their misuse for political ends anathema to the rule of law. ED, CBI, NIA, तुमने political powers of armed government की बात की, political they are too powerful of the government to ensure rule of law and maintaining order. ठीक बात है, चलो। Financial oversight, anti-corruption body, Ministry of Finance investigates money laundering cases under FEMA, Vijay Mallya PNB scam, deterrent against such crimes. Future also more digitization, less opaque functioning of bodies, benami transactions and fraud strictly prohibited. बिल्कुल सही बात है। Strictly penalized, I shouldn't say prohibited. Strong powers of ED like confiscation of property, fugitive offenders, पहले भी वही लिखा गया था। ED is involved in political vendetta, तो selective targeting नहीं होनी चाहिए, weakening independence and due to political influence नहीं होना चाहिए, जैसे विनोद दुआ केस के अंदर किया गया था। Targeting opposition ruled duties states is bad, it is bad practice, it is mal governance actually. So I think फेयर इनफ मेजर्स में आपने बात की, स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स होना चाहिए, उसके बाद अपॉइंटमेंट्स की बात की आपने, लीगल सेफगार्ड्स की बात की, सुप्रीम कोर्ट इशूड गाइडलाइन, सीबीआई इन द विनीत नारायण की सीबीसी रिपोर्ट्स की बात की, ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग, कैरिंग नेचर, changing nature of cyber frauds, cryptocurrency, deepfakes. I think fair enough, good effort, pushing is there on the right direction. It is going to help us in the future. Increased penetration of mobile network, internet infrastructure, smartphones have made governance private to the welfare program of government, but it is for the challenge exclusion. जैसे ट्राइड की आपने ही बात की, जैम ट्रिनिटी की बात की, लास्ट माइल की बात की, कैसे गुड गवर्नेंस आई, आपने टेलीमेडिसिन बता दिया, कंप्लेंट बता दिया, ट्रैकिंग बता दिया, अवेयरनेस बता दिया, ऑनलाइन एजुकेशन बता दिया। चलिए, रिजल्टेड किसमें हुआ, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। these 3 points can fetch some marks। efficient allocation है 40,000 करोड़ का, ट्रांसपेरेंसी है, उमंग के आपका आपने एग्जांपल दिया, एम्पावरिंग सिटीजंस की बात की, किसान सुविधा ऐप की बात की, लेकिन चैलेंजेस की बात की, डेटा सेफ्टी, डिजिटल डिवाइड, डिजिटल लिटरेसी, मिसमैच है आधार ऑथेंटिकेशन और उसके, और बाकी जैसा हमने कहा जो सोशियो कल्चरल जो मतलब बैकवर्डनेस है, मुझे डर लगता है, मैं यूज ही नहीं करूंगा। जो टारगेटेड ओवररीच होनी चाहिए एनजीओ और कॉमन सर्विस सेंटर की तरफ, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए, उतना आसान नहीं है। We are not going to use it the way it should be. So governance has revolutionized the way administration and the living of people with more ease and better connected. So this should be seen in that light. So I think 1 or 2 more practical points are missing. That's the answer is on track. 69th Amendment Act provides provisions for the governors of duty of Delhi, discuss and analyze the implications of divergences on various issues between elected government and the cabinet. तो ये एनालाइज और इम्प्लीकेट करना है कि लोगों पे क्या इम्पैक्ट आते हैं, जैसे हमने पहले आंसर में भी देखा, तो यानी वही गवर्नेंस सिस्टम जो है कोलैप्स हो जाता है उस तरीके से। देयर मस्ट बी स्मार्ट वे। अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल ट्रांसफर्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का आपने एग्जांपल दिया, यूनियन गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस बना दिया तो आपने उसको बताना शुरू कर दिया, डिले इन पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, बट द फर्स्ट पैराग्राफ में ठीक से ना पुट अप होने के कारण सेकंड की वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। डिसएग्रीमेंट हो गया पॉलिसी फॉर्मुलेशन पे, हर आपने रोशनी स्कीम की बात की और कोविड-19 की बात की, पॉलिसी फेलियर्स की बात की, तो मतलब थोड़ा और अच्छे से आई थिंक क्लैरिटी और कॉन्सेप्चुअली बढ़िया हो सकता था। इट इज नॉट डन द वे इट शुड बी। क्रॉनिक मालन्यूट्रिशन के अंदर ऑल इनकम्पासिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए, जैसे हमने पहले बात की, न्यूट्रिशन स्पेसिफिक, न्यूट्रिशन सेंसिटिव एंड अचीविंग द गोल ऑफ जीरो हंगर। तो जीरो हंगर के लिए आपने हिडन हंगर की बात की, टेलर्ड अप्रोच की बात की, क्या डायरेक्टली एड्रेस टारगेटेड बेनिफिशियरीज, आईसीडीएस, चिल्ड्रन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, वुमेन, जिंक, आयोडीन, विटामिन डी, आयरन, फॉलिक एसिड। चलो अनीमिया मुक्त भारत बहुत अच्छा एग्जांपल है। पॉइंट 2 डाइवर्सिटी ऑफ nutrition availability through PDF shop, 45 PDF and also MDMM, midday meal scheme, improve the quality and the life of healthy workforce, increase participation, encourage crop diversification। अच्छा एग्जांपल है BT Vigil, DMH 3 variety, therefore nutrition अच्छा लिखा जा रहा है, बढ़िया लिखा जा रहा है, गुड वैल्यू बेस्ड आइडियाज आर बीइंग रिफ्लेक्टेड। ओवरऑल ऑफ क्रिमिनल लॉज इन द कंट्री, लॉन्ग चेरिश रिफॉर्म है, स्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं, कंप्लीट इम्यूनाइजेशन की बात हो रही है, जैसे हमने पहले भी बात की थी, रिकमेंडेशन की साइड करते हुए आप डिस्कस कीजिए। आपने पहले बता दिया, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता।
जेंडर न्यूट्रल, वुमेन एम्पावरिंग, इंडिजिनस, ठीक है आपने बताया, क्लॉज, पुलिस, जुडिशरी, प्रोविजन, जस्टिस, बहुत अच्छी बात है, चलिए स्टेपिंग टू जस्टिस। फिर उसके बाद आपने बताया फेयर इन्वेस्टिगेशन, वीडियो हियरिंग, सिंप्लीफाइंग। तो आप बताओ कि ये कैसे कॉलोनाइजेशन, माई बाप नहीं है सरकार, माई बाप वाला एटीट्यूड खत्म करने की बात है। तो पुलिस रिफॉर्म्स, रिविजिटिंग एविडेंस एक्ट, डिजिटाइजेशन, सीसीटीएनएस सिस्टम, कंप्लीट डिजिटाइजेशन, स्पेशलाइजेशन, साइबर सेल, जुडिशरी में आपने पेपरलेस कोर्स की बात की। तो आई थिंक वेरी गुड एग्जांपल्स, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर है। Bail should be norm and jail should be exception. Open presence in Rajasthan and Shimla. Digitization of bail issuing orders to prevent delays by prison authorities and protect human rights in prison. I think fair enough. Good fight. Lot of points are visible. More sensitivity will come when you practice more. Critically examine the utility of social audit. ठीक है, participatory tool है, बिल्कुल सही बात है। Transparency, accountability as mandated. MG नरेगा का एग्जांपल दे दिया, डिस्पर्सल है, आइडेंटिफिकेशन, रिजॉल्विंग, चैलेंजिंग, मेकिंग, इंश्योर फेयर फंक्शनिंग, ठीक बात है। रिड्यूस करप्शन एंड लीकेजेस, राजस्थान की बात की। पॉजिटिव बैकड्रॉप लूप टू इंश्योर वेलफेयर मॉडल, गवर्नेंस की बात की आपने। उसके बाद इट इनेबल्स इंटेंडेड चेंजेस की आपने बात की, ठीक बात है। उसके बाद आपने फर्जी बात, आई थिंक गुड पॉइंट, लेकिन इसमें स्टेट और थोड़ा सा वो जो बात कर रहा है कि भाई मतलब कि थोड़ा सा इसका क्रिटिकल एलिमेंट भी लेके आना है, आई होप नीचे आता है, देखते हैं, नहीं आया तो हम नहीं कह सकते, थोड़ा सा। उसके बाद आपने इनोवेट द फैक्टर दैट मेक इंडो पैसिफिक थिएटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया, चलिए आगे। इंडिया ज्योग्राफिकल लोकेशन, चलिए वहाँ उन्होंने पूरा मैप बना दिया था, हम देखते हैं हमने क्या किया। इंडिया लाइज इन द ट्रांजिट सी ऑफ प्लेन्स, कम्युनिकेशन, ठीक बात है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक, गुड होप, रेड सी, पर्शियन गल्फ, you can explore potential. I think very different and innovative approach, simple approach. May fetch marks. Bay of Bengal, largest bay in the world, trade opportunities, lot of points, blue economic potential. चलिए आगे, fisheries, संपदा, ecotourism, shipping. China's increased presence, possibility of blocking Malacca Strait, Taiwan Strait tensions. I think good points, good efforts in that direction. ब्रिक की अगर हम बात करें, ब्रिक सर्विस प्लेटफॉर्म, ब्रिक इज एन अल्टरनेटिव, ठीक बात है। अल्टरनेटिव डेमोक्रेटिकली फॉर्म ऑफ मल्टीलेटरल ऑर्डर की बात है। अपॉर्चुनिटी एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स विद इजिप्ट, ठीक बात है। इट इनेबल्स ग्रेटर पुश टू यूएन रिफॉर्म, फेयर इनफ। चलिए आगे, अल्टरनेट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म है, ग्रेट रोल इन ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। आई थिंक वेरी साइंटिफिक अगर अप्रोच की बात करें तो पॉइंट बहुत सारे हैं, पॉइंट बहुत अच्छे हैं, पॉइंट में कोई कमी नहीं, उनका थोड़ा कनेक्टिंग एलिमेंट हल्का सा बनना चाहिए कहीं कहीं पर, ताकि आपने अपना कोई पॉइंट बीच में बता दिया, उसको जोड़ना है बस हल्का सा, बाकी सब तो आई थिंक फेयर इनफ, इट हैज राइजन अप टू द लेवल। बट सो बहुत सारे भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपका आइडिया भी निकल के आना चाहिए, फ्लो के लिए बहुत जरूरी है। चलिए आगे। हाँ, भारत के संविधान की हमने बात की, उधार जैसा नहीं है, तो देश का संविधान उधार नहीं है, उसकी हमने बात की। मानवीय मूल्य, सामाजिक संरचना, बहुत अच्छे हैं। लॉ, क्रांति, रिफॉर्म, ये लाइन बहुत अच्छी है। उसके बाद सुंदर स्रोतों का आपने बात किया, वंचित वर्गों का संरक्षण की बात हो रही है, अनुसूची 6 की बात हो रही है, डीपीएसपी की बात हो रही है, प्रस्तावना की बात हो रही है। चलिए आगे, भाग 3 की बात हो रही है, फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही है। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसकी आपने बात की, तो सांस्कृतिक कला दिखाती है, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। तो इसीलिए हमारे संविधान को आपने भी इनोवेटिव पॉइंट से लिखने की कोशिश की। चलिए आगे चलिए। अगर हम अगले प्रश्न की ओर ध्यान दें, अगला प्रश्न नहीं है, एक ही So that's all. प्रश्न, नो वरीज, एक प्रश्न से भी हम कहेंगे कि उन्होंने कोशिश की, और हमें इसके लिए हम उनका हृदय से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि एक लिखा, एक लिखेगा वही अनेक लिखेगा, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। सो विशिंग all of you all the best, and before that if you want to say and give your critical review, Vijay and Mansi, it will be appreciated. सर Thank you. आई वुड से कि थोड़ा सा लाइक जो फर्स्ट हाफ ऑफ द सेट था, जो हमने पहला सेट कवर किया, उसमें वी कैन से कि थोड़ा कंप्लीशन ऑफ द पॉइंट्स, या मेरे को लगा कि इनकम्प्लीट पॉइंट्स थे, एंड वी कैन फोकस मोर अपॉन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स आल्सो, मतलब पॉजिटिव टोन में जाना चाहिए और आंसर। बाकी जो सेकेंड हाफ ऑफ द आंसर्स थे, दे वर क्वाइट लाइक डिटेल्ड, एंड दी जो लैंग्वेज थी, दैट वाज आल्सो मोर एडमिनिस्ट्रेटिव। तो दिव्या, can you hear me? Divya, can you hear me? No issues. So I agree with your points, and we will revisit the session more than once so that we can, take up key values and ideas, and we will try to make sure that we are bringing these ideas in a normal and also in our daily work style. Then only we can say that we will be able to put our message.
Thank you very much and see you soon in the next session and series. For that, we are working in the background day and night, working thoroughly with complete scientific structure so that we can get success. All the best.